guys, what is up? If you are someone who is looking to study in the UK in the coming year, that's 2023, then this video is for you. Make sure you stick around to the end of the video. Let's go. Number 1. Length of the course. Guys, if you will compare the duration of the UK courses with other continents, mostly the duration is shorter. For example, bachelor courses in UK are generally for 3 years and master courses in UK are generally for 1 year. The reason why I'm saying generally is because some of the university do give you an option of extending your 3-year bachelor's to a 4-year and 1-year master's to a 2-year with an integrated work placement route. But not all the universities do that. This means that you pay 1 year less of tuition fee and 1 year less of living expenses. That's a good deal, right? Number 2, post-study work visa. Guys, एक बहुत amazing चीज़ recently launch हुई है, which is GIR, Graduate Immigration Route, which essentially gives international students 2 years of post-study work visa post the completion of your course. Guys, पहले ये duration 4 months था. So from 4 months, it has been extended to 2 years. And this is the exact reason why UK is seeing an influx of Indian students choosing UK as a study destination. Number 3. UK degrees are now going to be accepted in India. Yes, you heard it right. This is another amazing recent development which happened on 21st July this year, 2022, where UK universities went on a legal agreement with India, which claimed that now the higher qualifications from UK would be accepted in India. So guys, if you're looking to come back to India after your studies in the UK, this is an awesome opportunity. Number 4, English requirement. Guys, to get admit from any of the UK universities, you need to demonstrate a minimum level of English. And the most accepted language test here is IELTS, which is International English Language Testing System. So this could be offline or online. So either you can opt for a paper-based test or computer test, and the difficulty level for both of them is exactly the same. Apart from IELTS, some other language tests which are accepted in UK are TOEFL, and PTE, which is Pearson English Language Test, or HLA, which is Holmes Language Assessment Test. Very few UK universities also accept Duolingo or MOI. What is MOI? MOI is medium of instruction. But guys, not all the UK universities accept this, so please make sure you contact to your university or your aspiring universities to make sure whether they do or they don't. And one last thing to remember here is some of the UK universities also give an IELTS waiver based on your 12th English scorecards. So again, make sure contact to the university representatives and get clarity. Number 5, CAS. Now what is CAS? CAS is confirmation of acceptance for studies. Basically, आपका admit card. Whenever UK university finally accepts, they would give you a document called CAS, confirmation of acceptance of studies, which is the mandatory document for you to apply to the visa. So before getting a CAS, you can't even apply for a visa to fly to UK. So make sure you have a correct CAS from the university that you have applied for. Number 6, scholarships. Yeah, scholarships किसे नहीं चाहिए होती है. There are so many scholarships which are funded by UK government, and not just UK government but also Indian government and private organizations. You know what guys, I have made a dedicated video on this, how you can study 100% free of cost in the UK. Do check out this video. Number 7, skill shortage list. अब ये क्या होता है? जब भी आप एक कंट्री में जाने का टारगेट करते हो, इट्स अ गुड आइडिया टू नो द जॉब सिचुएशन इन दैट कंट्री, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस लिस्ट इज गोना टेल यू. सिंपल है, बस गूगल करो स्किल शॉर्टेज लिस्ट इन यूके एंड आपको जो फर्स्ट सर्च मिलेगा, सो उस लिस्ट में वो सारे प्रोफेशंस है जिनमें शॉर्टेज है. बेसिकली डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है, विच मीन्स कि किसी कंट्री में कोई भी प्रोफेशन की अगर डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाते हैं. नंबर 8, टीबी टेस्ट एके ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट. गाइज, हम इंडियंस को ये सर्टिफिकेट मैंडेटरी है टू सबमिट बिफोर इवन वी कैन फ्लाई टू यूके. इनफैक्ट दिस डॉक्यूमेंट इज़ नीडेड इन योर वीज़ा प्रोसेस. गाइज, इंडिया में बहुत स्पेसिफिक सेंटर्स हैं जहाँ पे आप ये टेस्ट करा के सर्टिफिकेट ले सकते हो. इनफैक्ट यू कैन गेट ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट दिस. आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल.
तो आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो तो ये वेबसाइट ज़रूर चेक करना, क्योंकि आपका जो नियरेस्ट सेंटर है उसके एड्रेस डिटेल्स ये आपको दे सकता है। नंबर 9, part-time jobs. Guys, as an international student, you can only work for 20 hours, maximum 20 hours per week, and this is clearly specified in your visa as well. So alongside your course study, you can look out for other part-time jobs, but not exceed 20 hours per week. हॉलीडेज में हालांकि आप 20 आवर्स से ज़्यादा कर सकते हो, दैट डजंट गो अगेंस्ट द रूल्स। नंबर 10, गाइज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स शेयर करने वाली हूँ और इस वेबसाइट का नाम है gov.uk। यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड यूके मार्केट इज मेंशन इन दिस वेबसाइट along with visa. I think you will get all the necessary information that you would require as an international student. Please check it out. Finally, number 11, guys, this is a bonus tip. वहाँ पे जाके ना एक्सेंट बहुत डिफरेंट होने वाला है। तो जैसे हम जनरली अमेरिकन वेब सीरीज़ काफ़ी देखते हैं ना एज इंडियंस, तो आपने देखा होगा कि वाटर को वाटर मतलब आर बहुत रोल करके बोलते हैं, वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। ब्रिटिश इंग्लिश ना आर को बोलते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई ट्राई टू इमिटेट वाटर, मतलब आर बोलते ही नहीं है। द पॉइंट ऑफ शेयरिंग दिस वॉज इनिशियली मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत इंटिमिडेटेड फील करती थी कि यार समझ में ही नहीं आता था उनका एक्सेंट डिफरेंस। व्हाट आई वांट टू से हियर इज़ इनिशियली आपको भी वैसे लगेगा, अंडर कॉन्फिडेंट फील मत करना, दैट्स कॉमन, दैट्स वेरी नेचुरल। गिव इट कपल ऑफ वीक्स एंड डेज, यू विल बी फाइन। थोड़े दिन में ना आपको भी आदत हो जाएगी एंड यू विल गेट टू लर्न देयर इंग्लिश। ऑफकोर्स इंग्लिश सीखो गाइज, उनकी एक्सेंट मत सीखो यार, बी प्राउड ऑफ इंडियन एक्सेंट। सचिन वाटर देना, थैंक यू। So guys, these were the top 11 facts that you must know if you are planning to study in the UK. Tell me in the comments below if you found this video useful and share it with your friends and family. And I'm going to see you next time with a new video. Bye bye.